It is one of the most common cancer among the female cancers. It is the seventh worldwide. It is the seventh most common cancer among the females. Majority of the patients they present in the age group of 65 to 75 years. Okay. Till 80% of these cancers they are confined to the uterus only at the time of diagnosis, and these patients they present with postmenopausal bleeding in initial stage only. That is why there is high chances that it leads to prompt detection of these cancers at an early stage only. Most common risk factors, as we all know, these are the part of the metabolic syndrome. Whatever patients which fall in the metabolic syndrome is like increased BMI. There has been found in some studies that if the BMI is more than 30, so there is around more than 273% increase in the risk of endometrial cancer, because it ultimately leads to hyperinsulinemia, and that ultimately leads to hyperestrogenic conditions that causes endometrial hyperplasia. Then second comes under hypertension. Then there is dyslipidemia and prolonged exposure to unopposed estrogen, which is often related to nulliparous, and infertility, which is associated with PCOS, or the use of drug tamoxifen in case of breast cancer users, because tamoxifen is a drug which actually causes endometrial hyperplasia. Okay. Since most of these cancers they are sporadic, but 5 to 10% they are still occur as a form of hereditary syndromes like HNPCC, that is hereditary non-polyposis colorectal cancer, or Lynch syndrome. Okay, and these Lynch syndrome patients they have 10 times more risk of developing endometrial cancer, and they also have increased risk of developing colon and ovarian cancer. And in this, genetic mutation is mostly comes under microsatellite unstable tumors, and these tumors generally occurs at a younger age. So if any patient who is diagnosed with endometrial cancer, there is screening for as a HNPCC, either as a part of ovarian cancer or colorectal cancer, their endometrial screening, either by doing biopsy or by just doing ultrasound, it should be started at the age of around 35 years, every 2 yearly. Okay. Then, then there is a classification. Initially, ma'am, the endometrial cancer was divided into two classifications. Sorry, two types. That was type 1 and type 2. So type 1 was the background was of endometrial hyperplasia that mainly occurs due to hyperestrogenic stage. And second was if the endometrial cancer is developing at a background of atrophic endometrium. That means there is no evidence of hyperplasias. So the type 1 of endometrial cancer, which occurred in a hyperplasic environment, they tend to occur in younger women and they had got better prognosis. And those type 2, which tend to occur in atrophic endometrium, they tend to occur in old age women, and their histology also differs from the type 1, and also they had got much poorer prognosis. Okay. But now those classification has slowly changing, and now we are coming to the molecular classification. And there was a study by the Cancer Genome Atlas. So this classification is slowly coming into our practice. The reason for this classification coming in our practice is initially type 1 and type 2 का जो molecular typing था, it was very haphazard. Like in type 1 also there could be multiple mutations like P53, MSI, MMR, everything. And in type 2 also could be there. But since the new targeted therapies which are coming, they are actually targeted to a particular molecular type. That is why this new classification came to be in practice. So it basically consists of 4 groups: ultra mutated, hyper mutated, somatic copy with high number, and somatic copy low number. ठीक है. Then ma'am, molecular and clinicopathological features, they have actually described how much is the prevalence and what are the features of these different types of molecular subtypes. First is the pole mutation, which actually occurs in just 5 to 15%. But the pole mutation actually has got the best prognosis. But the incidence of pole mutation is very less overall, that is just 5 to 15%. And it generally occurs in the early stages. Whereas when we go to the P53,
P53 also occurs in just a few number, that is 5 to 15% of population, but it has got the worst prognosis even in stage 1 diseases. While the microsatellite, sorry, MMR deficient. microsatellite instability and non-specific molecular profiling, they are much more common, but both these molecular testing, they have got intermediate level of prognosis after surgery or during the follow-up. And ma'am, once we got this like tissue specimen and there is a diagnosis of endometrial cancer, here we doesn't consider histology anymore. It could be either endometrial type of cancer or it could be serous, clear cell, anything. We will first of all be doing the pole mutation. So if the pole mutation is positive in that sample, that is generally only 5 to 15% of cases, then we can uh, change the treatment modality accordingly. And in generally pole mutated cancer stage 1 and 2, we does not require any adjuvant therapy. Whereas if their pole mutation is negative, then we will go to the microsatellite instability testings, which actually includes a panel of 4 tests, ma'am. Microsatellite instability may comes MSH1, MSH2, MSH6, and PMS2. These 4 types come under microsatellite, which we check. If they are positive, one of them is positive, then the treatment will vary accordingly. And if all the 4 are negative, then only we will proceed to the next testing, that is called as P53 testing. Isme we will check whether it is a wild type or a mutation, and accordingly our treatment will change. So Then, in a low profile patient, what I am saying कि in a low budget areas or low budget countries, this is all the guidelines of developed nation na. Yes, ma'am. So in say our in developing countries, what we people are doing, that is we are doing first P53 and followed by MSI. We are not doing pole We station are first doing pole mutation. Yes, because yes, pole ma'am. mutation is costly. And ठीक है. plus it occurs only in 5 to 15%. मैम उसका मतलब परसेंटेज भी ज्यादा नहीं है. तो P53 मतलब करके as we compared can to other. risk rule out high risk patients. ई P53 पॉजिटिव है तो Yeah, पेशेंट को डेफिनेटली एडजुवेंट ट्रीटमेंट लगना ही लगना है. लगेगा ही. ठीक है. हाँ. if Even if she is stage 1. So if that's why in developing nation we for doing some shortcut we are doing P53 first. If P53 is negative, then only we are going for MMR test or MSI testing. If that MSI testing is also negative and P53 is also negative, Then we can. then already we can understand कि ठीक है, this patient might be having pole mutation Pole mutation. and we can rule out in this way. Yes, ma'am. Because pole mutation is like a NGS testing and all. So for developing nation, we are going retrospective. So this is the funda Yes, why ma'am. we are doing P53 first. Okay. Chalo, next. ठीक है. हाँ. One video of Somshekhar sir, you will can watch that in YouTube. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I'm going next line. So, what are the recommendations according to the ESMO guidelines? Histological type, PIGO grading, the myometrial invasion, and lymphovascular. Focal means if less than 4 vessels are involved by the tumor emboli, and substantial means if more than 4 tumor vessels are involved by the emboli. They all should be described in the pathology specimens. Molecular classification via the IHC in combination with the tumor sequencing, that is pole analysis, it should be carried out for all the patients regardless whatever is the histology. That means now we have to start doing this molecular testing irrespective of whatever the diagnosis comes on the histopathological specimen. Okay. Then, ma'am, what are the recommendations for staging? How you are going to stage the patient?
Generally the staging is surgical only, but we can do a pre-operative workup also to let us know how much we need to stage, or we can get an idea how much we need to tackle the disease out. Like we can obtain endometrial sampling by doing a biopsy and DNC. And pre-operative workup, it basically includes all the clinical examinations, ultrasound. MRI is mainly used, ma'am, for to see the Parametrium. basically cervical extension, parametrium and the cervical extension. And then it will come a full blood count and liver and renal function test. Additional tests like thoracic and abdominal CT or FDG PET CT, they can be considered whenever there is a risk of extra pelvic disease. Sure. In some places it was also written that if you want to see, like, if the disease is involving like if you're suspecting some extra pelvic extension, you can directly go for FDG PET CT also. But Thing generally is कि they say MRI कि, uh, ma'am, MRI is definitely better for parametrial and stromal invasion के लिए. एक मिनट But कंसल्टेंट का since फोन it आ is रहा for है. पूरे, हेलो. हाँ, यस सर. नील कैसे हो गया नहीं पता, पर अभी आ रहा है. 30 ml आया है लास्ट में. अमिका सिन्हा बंद कर दिया, और अभी लासिक्स भी दिया है, और नॉरैट शुरू किया है. 90 बीपी था. स्टिल नहीं दिया है उन्होंने. बीपी 90 था इसलिए नहीं दिया था, तो वो नॉरैट स्टार्ट किया है. बताएगी वो 1 घंटे में बताएगी. फ्लश कर दिया उसने फोलीस. कर दिया, नॉरैट स्टार्ट कर दिया. वो तो ठीक है, उसको क्लियर लिक्विड भी स्टार्ट कर दिया. अरे नहीं, वो प्रमोद पांडे को आज मैं नहीं गई थी राउंड्स पे, आज भानु गई थी. वो RPL NDA को. ओके, ठीक है, बताती हूँ. ओके. हेलो. स्टार्ट. यस मैम. चलो ना शुरू. क्या तुम बोल रही थी? हाँ, सीटी स्कैन मैम डायरेक्ट वो कराना है. हाँ एक्चुअली हाँ MRI, हाँ. बिकॉज वो MRI का एक तो आउटसोर्सिंग है, MRI कॉस्टली है. अनटिल एंड अनलेस वी आर थिंकिंग कि डिसीज इज ऑपरेबल, और वी हैव सच डिलेमा कि डिसीज इज नॉट एबल टू ऑपरेट या ऐसे कुछ है, देन ओनली इन दैट कंडीशन जस्ट यस और नो के लिए वी शुड गो फॉर MRI. इफ इन PV only you are feeling that parametria in involve, it means we are not able to do radical hysterectomy. Then what's the need of doing MRI, na? Just increasing the cost. That's Yes, the ma'am. point. So, ma'am, the treatment for stage 1 is mainly surgery. That is hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, and it is a grade 1 evidence. Then, accordingly, the histopath specimen, if it suggests of grade 1 and 2, ma'am, now they have actually classified this grade 1 and grade 2 को as low grade, and grade 3 को specifically as high grade. Now they don't consider as a grade 1 and grade 2 separately. And third is stage 1, serous endometrial and carcinosarcomas. So if it is stage 1A, grade 1, and then we can go even for a minimal invasive stage 1, grade 1, 2 or 3. In all the three, we can go for a minimal invasive surgery, and sentinel lymph node assessment, it can be considered if you are suspecting any nodal involvement. But for stage 1, if it is a serous or histology or a carcinosarcoma only, then we need to go ahead with the full surgical staging, including omentectomy, peritoneal biopsies, and lymph node staging.
since these two histologies, they are actually associated with high chance of recurrences and poor prognosis. Then, this is, ma'am, according to the molecular classification, we have divided the risk groups into 4 categories: low risk, intermediate risk, high to intermediate, and high risk. So, low risk is basically stage 1A, grade 1 and 2, that is low grade, with endometrioid type, with no or focal lymphovascular space invasion. And ma'am, low risk में all the pole mutations are coming in this, whether it is stage 1 or 2. And even for stage 3 pole mutation, we are considering them now as low risk, but further studies are still needed. Then in intermediate risk group, the complete stage 1, either with the high grade, that is grade 3, or with a non-endometrioid histology, that is serous, clear cell, carcinosarcoma, or mixed type. And stage 1B, that is more than 50% of the myometrium is involved. And stage 2, grade 1 endometrioid, that is if the cervical stromal is involved. So they all will come under intermediate risk. Okay. Then हाई टू इंटरमीडिएट रिस्क में मैम स्टेज 1 है एंडोमेट्रियोइड, बट नाउ देयर देखो इज इजी सब्सटेंशियल तरीका, इतना लिम्फोवास्कुलर इतना इन्वेजन। कॉम्प्लिकेट मत करो, इजी तरीका याद कर लो। ऑल P53 पॉजिटिव्स आर हाई रिस्क, हाई रिस्क, हाँ यस मैम, सीरस और पोल म्यूटेशन अनडिफरेंशिएटेड, लो रिस्क। हाँ सीरस और अनडिफरेंशिएटेड और कार्सिनोसार्कोमा, ये तो पहले भी हाई रिस्क थे, अभी भी हाई रिस्क है। और ऑल स्टेज 3, ऑल स्टेज 4A डिसीज़ हो चाहे नहीं हो, कोई भी मॉलिकुलर हिस्टोलॉजिकल टाइप है, वो सब हाई रिस्क है। ठीक है, तो हमको ये तो चला ही गया, 3 और 4 तो चला ही गया पूरा, ये P53 भी चला गया, ये 3 बेकार वाले हिस्टोलॉजी, सीरस अनडिफरेंशिएटेड, ये सब हाई रिस्क है। ठीक है, अब हमको सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 पे फोकस करना है, क्योंकि वही ये 3 कैटेगरी बना रहा है। हाँ हाँ यस मैम, तो और तुमने मेनली जो ऑलरेडी बता मॉलिक्यूलर दिया। क्लासिफिकेशन है ना मैम, उसका यूजफुलनेस 1 और 2 के लिए ही मेनली है, रादर देन फॉर 3 एंड अबव स्टेजेस के लिए। तो पोल म्यूटेशन तुमने पहले ही बता दिया कि वो स्टेज 1 में गया। वो वाली स्लाइड लाओ ना, पुरानी स्लाइड। हाँ मैम एक मिनट, हाँ हाँ, और उसके अलावा हमको स्टेज 2 में इंटरमीडिएट और हाई इंटरमीडिएट है, तो क्या इंटरमीडिएट और हाई इंटरमीडिएट के ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंस है? हाँ यस मैम है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ चलो फिर देखते हैं, फिर इसका कुछ ट्रिक मैम बनाएंगे। छोटा सा ही डिफरेंस है, ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ फिर उसके लिए वो वी हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है। अब मैम इसमें स्टेज 1 to 4A, दिस इज एडजुवेंट ट्रीटमेंट दैट वील बी गिविंग इन लो और इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप्स। हम लो रिस्क में हमने देखा था ऑलमोस्ट सारे पोल म्यूटेशंस वाले थे, एंड स्टेज 1A में लो ग्रेड वाले थे। तो इसमें एडजुवेंट थेरेपी इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इवन फॉर पोल म्यूटेशंस एंड स्टेज 1A लो ग्रेड। ओके, देन मैम फिर हम आते हैं इंटरमीडिएट रिस्क में। इसमें मैम यही दिया हुआ है, जो स्टेज 1A है हाई ग्रेड हो गया है ना, या स्टेज 1B में लो ग्रेड हो गया, और स्टेज 2 में लो ग्रेड हो गया, या फिर स्टेज 1A में P53 ट्यूमर एबनॉर्मल है मैम, ये एक एक्सेप्शन है P53 का। अगर स्टेज 1A है यानी लेस देन 50% मायोमेट्रियम, P53 एबनॉर्मल है, बट इट इज नॉट इनफिल्ट्रेटिंग द मायोमेट्रियम, सिर्फ पॉलिप तक रेस्ट्रिक्टेड है या सिर्फ एंडोमेट्रियम तक ही है, जो कि यानी कि वो स्टेज 1A भी नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें एडजुवेंट थेरेपी की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऑल द 3 पेशेंट्स जिनमें इंटरमीडिएट रिस्क है, उन सब में वजाइनल ब्रैकीथेरेपी नीड्स टू बी गिवन, ओनली वजाइनल ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, ओके। फिर मैम उसके बाद हम आते हैं हाई टू इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में। हम हाई रिस्क वाले तो जितने भी हैं सब P53 वाले हैं, सीरस और अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है स्टेज 3 इसमें 4। कंकरेंट इसमें तो सीटीआरटी मैम देनी है। हमें दोनों दिन, हाँ कंकरेंट सीटीआरटी रहेगा।
या फिर या तो हम कॉन्करेंट दे सकते हैं या सिक्वेंशियल भी दे सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन और मेटास्टेटिक साइट्स वगैरह वो सब कैसा है। अब मैम जो हाई टू इंटरमीडिएट रिस्क आया उसमें दो तरह से उन्हें डिवाइड किया है। आइदर सम हैव डन द सेंटिनल लिम्फ नोड स्टेजिंग, तो उसमें कैसे करना है, और किसी में स्टेजिंग नहीं की है। बट आई मतलब वैसे उनने दोनों में ही मतलब कंसिडरिंग बोथ देम दे हैव गिवन कि एडजुवेंट ईबीआरटी दैट इज एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, मतलब कि हम थोड़ा और ज्यादा वाइड एक्सटेंड में हमें रेडिएशन देना पड़ेगा। हमने हाई रिस्क में सिर्फ वजाइनल ब्रैकीथेरेपी दी ब्रैकी थी, दिया था। यहाँ पे हम ईबीआरटी, हाँ हाँ, और यहाँ पे हम ईबीआरटी दे रहे हैं। और मैम वी कैन ऐड कॉन्कोमिटेंट या सिक्वेंशियल कीमोथेरेपी इफ देयर इज हाई ग्रेड या सब्सटेंशियल लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन होता है तो। ठीक है। बट मैम इसका लेवल ऑफ एविडेंस कम है, ये सी है, तो मेनली अपना फोकस 1A वाले एविडेंस पे रहेगा, यानी हमें ईबीआरटी देना है। ठीक है। मैम यही रिकमेंडेशंस वही डिस्क्राइब किए हैं कि हिस्टेक्टमी विद बीएसओ शुड बी डन इन अर्ली स्टेजिंग, मिनिमल इन्वेजिव अप्रोचेस हम स्टेज 1 में यूज कर सकते हैं। और मैम अगर स्टेज 1A है यानी लेस देन 50% मायोमेट्रियम है और लो ग्रेड है, तो उसमें वी कैन इवन गो फॉर ओवेरियन प्रिजर्वेशन इन प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स। जिसकी फिर मैम इनकम्प्लीट सेंटिनल रहेगी ना, लिम्फ नोड, जिसकी फैमिली नहीं नहीं कंप्लीट मैम, है। मैम तो मैम हिस्टेक्टमी तो हम वैसे भी कर रहे हैं ना मैम, ओवेरियन प्रिजर्वेशन मेनली पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए करते हैं मैम। हाँ हाँ, अग्री। हम्म। फिर मैम सेंटिनल लिम्फ नोड lymphadenectomy can be considered as a strategy for nodal assessment के लिए। इन लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क वाले में हम सेंटिनल लिम्फ नोड असेसमेंट भी कर सकते हैं। एंड इट कैन बी ओमिटेड इन केसेस विदाउट एनी मायोमेट्रियल इन्वेजन, मतलब मैम वही 1A से भी कम हो गया, अगर मायोमेट्रियम भी इन्वेडेड नहीं है तो सेंटिनल लिम्फ नोड असेसमेंट करने की भी जरूरत नहीं। फिर सर्जिकल लिम्फ नोड स्टेजिंग शुड बी कैरिड आउट इन पेशेंट्स जिनमें हाई इंटरमीडिएट या हाई रिस्क डिजीज है। इट इज एन एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव टू सिस्टमिक लिम्फेडेनेक्टमी, क्योंकि मैम यही होता है कि अगर सेंटिनल lymph node positive आ गया तो you can abandon the further surgery rather than going for systemic lymphadenectomy in every patient and causing lymphedema and मतलब सारे रिस्क, all the मॉर्बिडिटी। complications related to morbidity related to lymphadenectomy. And full staging, that is omentectomy, biopsy, lymph node staging, it is to be considered only for serous and carcinosarcomas. And सीरस whenever feasible, कार्सिनोसार्कोमा और एक वो अनडिफरेंशिएटेड। treated वाले में हाँ, और whenever feasible and with acceptable morbidity, cytoreductive surgery, it can be considered in stage 3 or 4 also मैम। फिर मैम वही दिया है हमने जो अभी पढ़ा था, वही सब मैम जॉट डाउन किया है कि वो जो लो रिस्क वाले हैं, यानी कि वही 1A में लो ग्रेड हो गया है, और 1A में नॉन एंडोमेट्रियोइड हिस्टोलॉजी है, और 1-2 में पोल म्यूटेशन है। तो वही मैम इन सब में हमने देखा था कि कोई एडजुवेंट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, नो एडजुवेंट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। देन मैम इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट में वही मैम सेम थिंग्स हैं कि 1A विद हाई ग्रेड, 1B with low grade, 2 with low grade, we can just do vaginal brachytherapy. Then high to intermediate risk of groups, इसमें मैम 1A and 1B में with substantial lymphovascular space invasion या stage 2 में high grade हो गया है, तो इन सब में मैम और adjuvant EBRT it is recommended. We can either add कीमोथेरेपी टू ईबीआरटी, अगर इसमें दो ऑप्शंस थे मैम, या तो ग्रेड 3 है या What सब्सटेंशियल chemotherapy लिम्फोवास्कुलर these स्पेस people are इन्वेजन है adding? Paclitaxel only. मैम। हाँ मैम, पैक्लिकार्बो ओनली। And with close follow-up, we can even omit any adjuvant therapy, and but that decision will be done on in a multidisciplinary basis in a tumor board only, ma'am. Then ma'am, this is the same that was with lymph node staging, and this is without lymph node staging.
Here also we have just given Adjuvant adjuvant EBRT. EBRT is recommended. हाँ वो वही है मैम. और मैम हाई रिस्क में वही कॉन्करेंट CTRT विल बी गोइंग विद दैट. फिर मैम उसके बाद आता है रिकरेंट ट्यूमर्स में. अब मैम रिकरेंट ट्यूमर्स में इट डिपेंड्स ऑन वेदर द पेशेंट हैज रिसीव्ड रेडियोथेरेपी प्रायर और नॉट. अगर मैम उसका जब सर्जरी हुआ था, अगर उसके बाद पेशेंट ने रेडियोथेरेपी रिसीव नहीं किया है और लोकल रिकरेंस है, तो वी कैन गिव हर वजाइनल ब्रैकीथेरेपी या EBRT. लेकिन अगर पेशेंट ने पहले ही रेडियोथेरेपी रिसीव कर लिया था, शी हैज, हाँ, देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी ओनली इफ कंप्लीट डीबल्किंग विद एक्सेप्टेड मॉर्बिडिटी इज एक्सेप्टेड. और अगर ऐसा नहीं है तो वी विल डायरेक्टली गो फॉर सिस्टमिक, दैट इज कीमोथेरेपी. ओके. फिर इसमें मैम बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स ऐसे डिस्क्राइब किए गए हैं. What you can do in a recurrent or metastatic, like we can either go for hormonal therapy or you can go for a chemotherapy. And मैम hormonal में भी hormonal में आ गए progesterones आ गए, AI are the aromatase inhibitors, then there comes the tamoxifen and fulvestrant. Chemotherapy में मैम it's the same, carbopaclitaxel. And ma'am, then accordingly, if we are, whether they are microsatellite unstable or macrosatellite stable, ma'am, दोनों में ही we can re-challenge them with platinum based therapy. Or if they are not, if they are becoming resistant to them, then we can go for doxorubicin and paclitaxel. Or there is a combination of ma'am pembrolizumab, that is PDL1 inhibitor. मैम इट्स अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है PDL1. एंड मैम पेम्ब्रोलिजुमैब विद लेनवैटिनिब. लेनवैटिनिब इज अ मल्टीपल काइनेज इनहिबिटर. हाँ, तो मैम इनका कॉम्बिनेशन इज आल्सो अंडर ट्रायल्स. सो मैम अगर इनस्टेबल है तो उसमें एक और ड्रग है डोस्टारलीमैब, पर जो स्टेबल वाले हैं उसमें ये डोस्टारलीमैब नहीं है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. Because they are microsatellite unstable, so there is one more monoclonal antibody against them. में MSI हाई और MSI लो करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इसमें नहीं है वैसा कॉन्सेप्ट. मैम ऐसा हमने डिवाइड किया है मैम, MSI-H और MSI-H में मैम ये वाली ड्रग दे सकते हैं मैम, वो एक बार नीचे दिया हुआ है, ये पेम्ब्रोलिजुमैब वाली ही दी है मैम. मैम मैं बताती हूँ आपको आगे. क्योंकि MSI हाई शायद कीमो के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, पढ़ना पड़ेगा. लेट यू नो. हाँ ओके मैम. अब मैम फॉर पेशेंट्स वही दिया हुआ है कि मैम लोको रीजनल रिकरेंस है फॉलोइंग ओनली प्राइमरी सर्जरी एंड शी हैज नॉट रिसीव्ड प्रायर रेडियोथेरेपी, so we will be going directly for vaginal brachytherapy. Then we can add systemic therapy to salvage the radiotherapy. And for patients who have received prior radiotherapy, they should undergo surgery. If not feasible, then go for systemic therapy. Systemic therapy में मैम वही है, कार्बोप्लाटी है. And hormonal therapy can also be considered, but only in patients with low grade ये सब याद होना चाहिए रे, तुम लोग को तो याद ही होना चाहिए, हम लोग को भी याद होना चाहिए. कार्बोप्लेटिन का एरिया अंडर द कर्व 5 and 6 प्लस पैक्लिटेक्सेल का डोज 175 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर 3 वीक में दे रहे हैं. वो कहाँ गई वो तुम्हारी स्लाइड? मैम ये रही. हाँ, 21 days 3 वीकली दे रहे हैं, 6 साइकिल्स दे रहे हैं. तो ओवरी में भी यही देते हैं, सर्विक्स में भी यही देते हैं, ठीक है. और ओवरी में जो 3 NACT वाला कॉन्सेप्ट है, जो 3B वाली डिसीजेस को देना है, उसमें 3 साइकिल ऑफ NACT के बाद सर्जरी के लिए आना चाहिए पेशेंट, ना कि 6 साइकिल्स रिसीव करने के बाद. ठीक है. हार्मोनल थेरेपी के लिए कुछ ईस्ट्रोजन वगैरह रिसेप्टर करवा रहा है क्या? वो एंड्रोजन रिसेप्टर मैंने पढ़ा है, उसमें कुछ स्टडीज में दिया है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली ER/PR पॉजिटिव ट्यूमर्स विल बी रिस्पॉन्डिंग टू हार्मोनल थेरेपी. इवन ER/PR नेगेटिव ट्यूमर्स आर आल्सो गिविंग गुड रिस्पॉन्स. दैट इज व्हाई ER/PR टेस्टिंग अभी एंडोमेट्रियम के लिए नहीं हो रही है मैम. बट फिर भी इट
इज कंसिडर्ड कि जिनकी एंडोमेट्रियोइड हिस्टोलॉजी है, यानी कि हाइपरप्लेजिया के बेस्ड आया है, तो दे विल बी रिस्पॉन्डिंग बेटर एज कम्पेयर टू नॉन एंडोमेट्रियोइड हिस्टोलॉजी। ओके, तो फिर उसमें दे आर गिविंग प्रोजेस्टिन्स, एरोमेटेज इनहिबिटर्स, टेमोक्सिफेन और ये सब मैम। 2A, ठीक है। हम्म। सेकेंड लाइन देन देयर इज नो कीमोथेरेपी का। स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नो स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कोई सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी नहीं होता है मैम इसमें, जैसे ओवेरियंस में रहता है जनरली। फिर मैम ये क्या था, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स है मैम, दीज आई इम्यून चेक पॉइंट ब्लॉकर्स, monotherapy. It can be considered after platinum based therapy failure. मैम ये दिया हुआ है इन MSIH हाई वाले और MMR अनस्टेबल कैंसर्स में। इसमें मैम वही दिया है, डॉस्टारलीमैब, इट इज फॉर MSIH के लिए, इट हैज बीन नई अप्रूव्ड ड्रग है बाय ये, हमने FDA कभी फॉर नहीं दिस। पढ़ी। डॉस्टारलीमैब, ठीक है। हाँ फिर पेम्ब्रोलिजुमैब मैम वी आर यूजिंग सो पेम्ब्रोलिजुमैब, फ्रीक्वेंटली। हाँ ये भी ही ट्यूमर म्यूटेशन ट्यूमर बर्डन म्यूटेशनल हाई। बर्डन हाई, हाई वाले सॉलिड ट्यूमर्स के लिए ये भी मैम अप्रूव हुआ है। एंड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेम्ब्रोलिजुमैब विद लेनवैटिनिब who have failed previous platinum based chemotherapy and not candidates for surgery, उनके लिए भी ये अप्रूव हुआ है, बट इट इज अप्रूव फॉर नॉट MSIH वाले मैम। मतलब फर्स्ट टू आर फॉर MSIH, सेकेंड इज नॉट फॉर MSIH। ठीक है। Then ma'am we come to surveillance. Generally in low risk patients में मैम रिकरेंस, मैम ओवरऑल ऐसा दिया था कि जो रिकरेंस रेट होता है एंडोमेट्रियल कैंसर में वो जनरली विद इन 3 इयर्स हो जाता है, जो भी रिकरेंस होता है, Not एंड इट in इज जनरली ovarian, लोकलाइज्ड। not in all cancers. Usually in all cancers, recurrence जो रहता है वो most commonly first 2-3 years में ही होता है। ओके ठीक है, तो अच्छा, हाँ मैंने अभी ये पढ़ा था बेसिक तो लेकर। कॉन्सेप्ट है हाँ कैंसर्स का, जो इतना मैं समझ पाई हूँ। ओके तो सबका ओके 3 मंथली हम लोग फॉलो, इसे 6 मंथली लिखा है, हम्म। पर यूजली व्हाट हाँ वी हाँ डू मैम, कि ये सिर्फ लो रिस्क के लिए ही लिखा हुआ है हम्म कि 6 मंथ्स में करना है फॉर फर्स्ट 2 इयर्स और फिर 5 इयर्स में। मैम इसमें तो ये तक लिखा है कि वो तो फॉरेन का ही हो जाएगा डेफिनेटली, फोन फॉलो अप, जिसमें आपको पेशेंट को सिम्टम्स बताने हैं कि अगर कुछ होगा तो ही आना है, ऐसे करके। बट फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स में फिर एवरी 3 मंथ्स फॉर फॉर फर्स्ट 3 3 years, इयर्स then एंड देन 6 6 months। मंथ्स अंटिल 5 इयर्स। ठीक है। और मैम अगर आप नोडल एक्सटेंशन सस्पेक्ट कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर CT स्कैन और पेट स्कैन। मैम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्विलेंस के लिए ये रहता है दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विद एंडोमेट्रियल कैंसर दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाइक हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड everything, हाँ। So in patients में मैम, rather than dying due to endometrial cancer, most of the patients, instead of dying from cancer, they die from these cardiovascular events before. So Okay. these patients, they definitely require surveillance for exercise, diet, and weight management that should be promoted for all the patients with endometrial cancer. Because these patients, they die mostly due to cardiovascular events rather than due to cancer itself. Okay. Finish. यही था इसमें। हाँ You have NCCN guidelines. मैम होंगी मेरे पास, देखना पड़ेगा मैम मेरे टैब में। एक मिनट रुक जाओ, मैं इस तुम्हारा नॉन पेड वाला रहेगा ना, ये ऑलरेडी 10 मिनट्स में आई थिंक ओवर ही हो जाएगा।